आज मैं आया था एक दोस्त को ड्रॉप करने के लिए ओएमपी, जो कि कटक में है, और अभी वापस जा रहा हूँ भुवनेश्वर। और मैं काफ़ी दूर 10-12 किलोमीटर आ गया, तब मुझे याद आया कि चलो लेट्स मेक अ व्लॉग। लाइट से अच्छा दिख रहा है आई थिंक। तो वापस जा रहा हूँ, और जो हाल में देखा कटक में, तो वहाँ भी मैं सुना कि 144 लागू हो चुका है, तो लोगों को अलाउड नहीं है आके इकट्ठा होने के लिए। तो सेम हालत भुवनेश्वर में भी है। तो वंस अगेन हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। लेट्स होप कि अगले साल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप और हम मिलके सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय करेंगे अच्छे से। तो ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, अगर कहीं कुछ याद आएगा तो बोलूँगा। तो अभी आप लोग राइड एंजॉय कीजिए। और ये है पहाड़, और जहाँ का रसगुल्ला बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं लेफ्ट में और राइट में भी है मिठाई के शॉप्स। लेफ्ट साइड में है ऑडी शोरूम, और उसके थोड़ा आगे जो अपार्टमेंट्स है उसका नाम है उत्तर हाइट्स। 3 साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि इस अपार्टमेंट का टॉप फ्लोर में एक फ्लैट लूँगा, और उस टाइम मैं ऑलमोस्ट भिखारी था। और अभी हालत थोड़ी अच्छी है, मतलब आई एम हाफ देयर। I hope कि very soon I shall buy a flat of my own, and lots of my friends are telling me to get married. I think everyone of my friends has got married and only I am left alone. एक फ्लैट हो जाए रहने के लिए, फिर सोचते हैं शादी का। इस लॉकडाउन की वजह से सब कुछ स्लो हो चुका है, धीमा हो चुका है, बट स्टिल आई होप कि हो जाएगा। व्यू देखिए बस इस रोड का। इसको कहते हैं रोड।
तो मैं ये आ गया ऑलमोस्ट एंटर किया भुवनेश्वर में। तो अभी थोड़ा और घूमेंगे। अगर वो लोग रॉन्ग साइड से क्यों आते हैं? आते हैं मतलब ऐसे आते हैं जैसे राइट से आ रहे हों।